Namaskar and well wishes to one and all on November 16, 2025. Here, myself, P.V. Hariharan, Chartered Accountant, as Afaq has introduced me. And today's main theme is business risk and protection. Business risk and protection is the theme of the webinar. And the purpose of conducting the webinar is to reach to बहुत लोगों को पहुंचाना है। किन लोगों को पहुंचाना है? जो बिजनेस करते हैं, जोखिम लेते हैं, बिजनेस का भी जोखिम लेते हैं और अपना फैमिली के लिए भी जोखिम लेते हैं। सो उनका सुरक्षा होना चाहिए कि नहीं। और कोई भी वेबिनार, कोई भी सेमिनार, कोई भी वन टू वन मीटिंग में दो चीज ही होती है। एक तो अभी की स्थिति और मेरी इच्छा और मेरी इच्छा की जो स्थिति है, यानी उसको बोलते हैं करंट स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। तो कोई भी जब आदमी अपने आप को अटेंड करवाता है या अटेंड करता है, या उसकी दो ही परिस्थिति हुई, मेरी करंट स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वेबिनार अरेंज किया गया है कि आज मेरे बिजनेस बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ उसमें बिजनेस रिस्क का सुरक्षा है कि नहीं करके। अगर है तो अच्छी बात है, अगर है अच्छी बात है तो क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर आपके लिए ये वेबिनार है। और मैं समझता हूँ कि the way we do anything is the way we do everything. The way we do anything is the way we do everything. दूसरी भाषा में, आज जो करते आया हूँ वही करूंगा तो वही मिलेगा जो आज तक करते आया हूँ। आज जो करते आया हूँ वही करूंगा तो वही मिलेगा जो आज तक करते आया हूँ। अगर मुझे कुछ अलग करना है तो मेरी सोच भी अलग होनी चाहिए। तो इस संदेश को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वेबिनार, अपना मैसेज स्टार्ट करता हूँ। एंड इट विल बी बेस्ड ऑन बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन। बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन के लिए जरिया या वाहन क्या है? बिजनेस रिस्क एंड प्रोटेक्शन एक तो शब्द हो गया, इसके लिए वाहन क्या है? द वाहन इज कीमैन इंश्योरेंस। वो विद ई टच जो बना है वो तो कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है, लेकिन हमें ये समझना है कि बिजनेस जो कर रहा है, बिजनेसमैन, अभी बिजनेसमैन में कौन कौन आता है ये पहले जानना है। और मैं इस संदर्भ में जो आपको संदेशा दे रहा हूँ वो बिजनेसमैन के लिए है जिनका, दैट इज एमएसएमईस, मीडियम माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स। फिर बाद में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, जो अपने स्वयं का मीन्स खुद को दाव पे लगाते हैं और अपना अपना कौशल्यता से अपना कमाई करते हैं। तो इनका सुरक्षा करना जरूरी है। अगर आपने सुरक्षा नहीं लिया है तो आप अपने आप को जोखिम में डाल रहे हो। क्या आप अपने आप को जोखिम में डालना चाहते हो? क्या आप अपने आप को असुरक्षित रखना चाहते हो? आपके असुरक्षित से आपका फैमिली को धक्का हो सकता है, क्योंकि घर से बाहर निकलना तो निश्चित है, लेकिन घर में फिर आना ये किसी के निश्चित नहीं है, क्योंकि आजकल वातावरण ऐसा है कि सब जगह तनाव ही तनाव चल रहा है। तो तनाव का एकमात्र पर्याय है कीमैन इंश्योरेंस। और ये किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए। कौन से बिजनेसमैन? मैंने अभी भी बताया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स। और उसमें वो भी आता है कि जो छोटे दुकानदार है अपने दुकान चलाते हैं, बराबर, उनको भी कीमैन इंश्योरेंस उनके एम्प्लॉयज के लिए दिया जा सकता है। और ये क्यों देना चाहिए? क्योंकि क्या है, जब आप कोई भी धंधा चालू करते हो तो एक तो बहुत सारे अपने दिमाग में समस्या दौड़ती रहती है, एक दो तीन चार पांच। तो उस समस्या का समाधान के लिए ये आगे आगे चलते हुए मैं बताऊंगा, राइट। ये उदाहरण दिया है, एक देखो यहाँ सामने उदाहरण है पेट्रोल प्राइसेस का, पेट्रोल का भाव। पेट्रोल का खर्चा तो नौकरी करने वालों को भी है एंड बिजनेस करने वालों को भी है। इट इज एन expenses both for a salaried person as well as a business person. But there's a difference. When a salaried person does the petrol expenses, it is a hole in the pocket. That is, वो 100 रुपया खर्चा करता है तो 100 रुपये के साथ उसका 30 रुपये का टैक्स भी जाता है।
That is, for him it is an expenses of 130, and for a businessman the same expenses on 100 rupees of petrol expenses he can debit to his profit and loss account. अपना जमा खर्च में डेबिट कर सकते हो, और 100 रुपए का वो 30 रुपए बचा सकता है। अगर वो 30% स्लैब में हो, अगर 20% स्लैब में हो तो वो 20 रुपए बचा सकता है। यानी स्वयं का बिजनेस चलाने में जो रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। वरना सैलरीड पर्सन को कोई एरिया नहीं। वो नौकरी करता है, सिस्टम में नौकरी करता है, इनकम कमाता है, इनकम कमाने पर उसके ऊपर टैक्स लग जाती है, उसको अपना खर्चे पर कोई छूट नहीं मिलता है, राइट। यही पहले ये स्लाइड में बताया गया, और दूसरा स्लाइड में भी वही बताया गया है, वो जो मैं बताया गया। तो एक सैलरी पर्सन के लिए वो जो खर्चा है 131 रुपया है, और वही वही अपना इसको पकड़ा जाए बिजनेसमैन के लिए वो 72 है। यानी एक टाइम पे 1 लीटर पे एक 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 50 रुपये अपने जेब से ज्यादा बचता है, तो दूसरा 50 रुपये बचाता है। तो तो जो पेट्रोल पेट्रोल का उदाहरण दिया गया, इसलिए दिया गया कि क्योंकि कीमैन इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम का भुगतान करते हो, वो प्रीमियम का भुगतान, दैट इज वॉट एवर यू पे एज अ प्रीमियम, दैट इज अलाउड टू बी डेबिटेड इन P&L अकाउंट। अच्छा है नहीं सुनने को? इज इट नॉट गुड? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। सो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कीमैन इंश्योरेंस एक एक कवच है, जहाँ जो 100 रुपए का कवर है, तो 10 रुपए का प्रीमियम के भरते हो, प्रीमियम आपको P&L अकाउंट में डेबिट कर सकते हो, या खर्चे में बता सकते हो। खर्चे में बताने से आपका प्रॉफिट उस साल के लिए कम हो जाता है, या उसको, या तो फिर आपका टैक्स बच जाती है। टैक्स के बचत, टैक्स प्रॉफिट प्रॉफिट कम हो गया है, टैक्स बच गया, राइट। या तो टैक्स बचाने की दृष्टि में या प्रॉफिट कम करने की दृष्टि में ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 सब्सिजन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है। एंड दिस इज द बेनिफिट, ऊपर लिखा है टैक्स बेनिफिट टू द कंपनी, राइट। सो ये एक बड़ा 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 एक राहत है। इट्स अ बिग रिलीफ टू द person who is taking to who's planning to take key man insurance, or vice versa also, and business employer-employee insurance. Now, when a key man is to be covered, as far as the key man is concerned, the only product the insurance industry or the insurance company can give to the entity, that is entity that may be a partnership firm, private limited company, or LLP, that is the term plans. Only you can give the term plan, and whatever premium is paid, that can be debited to the P&L account, and he can get a tax relief. That is, his tax can be saved or his profit can be reduced. Either way, it's one and the same thing. And the Vahan jo hai, to cover the vehicle for covering the key man is term plan, in short. सरल भाषा में बता रहा हूँ। And if you want to ask me any question, you can ask at the end of the webinar. I will give you 5-10 minutes. ये है definition of key man insurance. Who is the key man? Employee is the key in the key position, like CEO, CAO, and CFO or salesperson is a key man. में CEO का मतलब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंड सेल्स। ये लोग कंपनी के लिए एग्जीक्यूटिव पोजीशन में रह के चलाते हैं। तो इसके लिए उनको की गया है, बिकॉज दूसरे भाषा में a person who substantially contributes to the business and who is holding a key position is a key man. की का मतलब ये है खास। एक दरवाजे के लिए की कितना जरूरत है, अगर ताला है तो ताला के लिए की जो जितना जरूरत है, दैट इज की मैन इंश्योरेंस। तो वैसे ही की मैन इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ जो खास आदमी है, इंश्योरेंस के लिए जो जुड़ा हुआ इंश्योरेंस के लिए जो एलिजिबल है खास आदमी, उसको की मैन बोलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अ की मैन इंश्योरेंस। अभी कोई भी चीज का बेनिफिट नहीं हो, फायदा नहीं हो, तो सामने वाला सोचेगा मैं क्यों लूं करके, राइट। तो ये जो बताया, तो सिर्फ 4 बेनिफिट बताया। एक तो
safeguard the business against the untimely devices of the key person. अगर की पर्सन के ना होने पे उनको जो नुकसान होगा उसको बचाने के लिए की मैन इंश्योरेंस दिया जाए. सेफगार्ड द बिजनेस. टैक्स बेनिफिट तो मैं पहले भी बताया. व्हेन a businessman takes a key man insurance, जो प्रीमियम का भुगतान होता है, that is allowed as expenses under section 37(1). और नेक्स्ट, कंपनी अपने बिजनेस चलाने के लिए ढेर सारे लोन लेती है. अगर लोन अपने सर पे है और कंपनी को चुकता करने का, तो की मैन के रहे होते हुए अगर बिजनेस में नुकसान होती है, सो द कंपनसेशन विल बी गिवन बाय द इंश्योरेंस कंपनी टिल दैट की पर्सन इज रिप्लेस. तो उसमें एक कवच है. एक लोन लिया है तो अगर लोन एक प्लेज है तो इंश्योरेंस एक हेज है. राइट. सो कोई भी बिजनेस लोन के बगैर नहीं चलते, और लोन अगर कंपनी के सर पे है तो लोन एक एक जोखिम है. लोन इज अ रिस्क. राइट. एंड इन केस ऑफ untimely event of the loss of the key person, the continuity of the business is in danger, and that can be protected by taking a key man insurance. And if the key person is a stakeholder in the company, like private limited company LLP, or private limited company LLP, or partnership firm, then उनके ना होने पर या उनके क्विट क्विट कर उनके निकल जाने पर और शेयर का प्रमाण में ये हलचल होता है. उस हलचल को स्टेबल करने के लिए तब से दूसरा आदमी रिप्लेस नहीं होता है until you find the replacement of the key person, or if this share is to be given more to the existing person in the till the time, if the key man is taken, that will benefit the company. Again, I have tell, apart from these four benefits, the continuity of the business is ensured. The company can operate freely in the business without worrying about the production, and it can concentrate vertically and horizontally in the growth and expansion of the business. Right. So अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के बारे में डायरेक्टर्स या पार्टनर उसके बारे में सोच सकते हैं. और अगर कीमैन को बचा लिया या इंश्योरेंस दे दिया तो दे कैन डू द बिजनेस विथ फ्रीडम. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कीमैन इंश्योरेंस. ये जो पार्ट है, दिस इज फॉर दोज हु आर गोइंग टू डू those who are going to cover the key person in the entity. यानी ये एडवाइजर के लिए और रिक्रूटर के लिए है. You should have an understanding of what is a key man. A key man should be holding less than 51% of the company share. And a professionally run company है तो the control should be less than 51%. And if it's a family run business, the total number of shares held by the key man and his family should be less than 70% of the company. इसका ज्ञान is the knowledge of this should be with the insurance advisor or the recruiter, right? And even so that when he goes to the company, or that is private limited company, LLP or partnership firm, depending upon the stakeholders ratio, and depending upon the who is the key person, he should pitch the plan. And the third portion, अगर कोई का आदमी खास आदमी है उस जिसके नाम पे एंटिटी को कवर करना है, तो that he is a key person, उसका एक प्रोफाइल कंपनी को देना, कंपनी है ना यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी और पार्टनरशिप को उनको देना होगा. एंड दैट विल अगेन बी कवर्ड इन द नेक्स्ट चेकलिस्ट में बताएगा. एंड देन दिस पर्टिकुलर स्लाइड विल बी एड्रेसिंग द इंश्योरेंस एडवाइजर एंड द रिक्रूटर हु वांट्स टू गिव द की मैन इंश्योरेंस टू द एंटिटीज. राइट. और एंटिटीज में मैं बताया तीन लोगों के तीन एंटिटी. Even an HUF can be covered under key man insurance. That is, if you form a HUF for tax planning purpose. This is important because there are many persons who are in the 30% tax rate. HUF can be formed as a tax planning tool for your assets. You can introduce it into the business, and then you have the members. Members को अगर salary देते होगे, then in that case the members can be covered as a key person, and the advantage is your business is protected at the same time. Your tax, you can use as a tax planning tool for reducing the taxes. And even a trust, even you can cover individual firm also, proprietary firm also. The only condition is वहाँ पे जो की मैन होगा वो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको वो सैलरी देते होंगे. राइट. द
owner cannot take a key man insurance. Next, checklist of key man insurance. Checklist है मुझे, if I am going to the company, if I am going to the entity to cover a key person for on behalf of the insurance company, what are the key man's document we have to cover, we have to take, so that documentation part, if it is full and if it's the underwriting part is full, then the proposal can be passed easily. Next, the proposal form. The entity has to be the proposer. They own the responsibility for the key man insurance. Who is that entity? Partnership firm, private limited company, LLP, or even case of HUF can be covered. And in case of proprietor, if the key person is the person to whom you are paying salary, in that case it is allowed. It is not allowed to the owner. In case of private limited company and partnership firm and LLP, directors or partners can be covered as a key person. There is a only distinction between proprietor and these entities. Okay, and a resolution from the board of directors. जैसे मैंने बताया, to resolution प्रस्ताव पास करना चाहिए डायरेक्टर्स या पार्टनरशिप फर्म की, ये आदमी की पर्सन है और उसका डिस्क्रिप्शन दैट इज अ की पर्सन, जो पहले भी बताया, प्रूफ ऑफ द की पर्सन इज अ की मैन, उसका की मैन का प्रोफाइल। अगर इंश्योरेंस कंपनी को एनेक्सर देती है, वो एनेक्सर में भरना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन अटैच द प्रोफाइल एंड द बोर्ड रेजोल्यूशन और पार्टनर्स रेजोल्यूशन, and so ठोस who is he is a key person, that is the annexure form of the key man annexure form given by the insurance company, then the prastav resolution and the brief description of the profile of the key man insurance. And while you are listening to this, if you are an advisor or if you are a person, if you are a prospect, please have a one-to-one appointment with us, because the whole purpose of discussion, the whole purpose of this discussion is मेरे करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में मुझे जाना है. If I have to transit from current state to desired state, if I have don't done the planning, then I will go on the negative like negative thinking, depression, frustration, everything will happen. So that's why you have to appoint a advisor, so that it goes straight from insurance company to the entity, and the bridge is that is the advisor or the recruitment person, right? So this is something I am adding today, because every time I repeat, there is something new, and that is why anything which is repeated, it doesn't mean it is repetition. Repetition is the mother of all skill. At the same time, when you repeat it many number of times, you also get insight into what you are discussing, right? So ये हो गया 4 document. Next, then the another 5 documents. So 4 plus 5 is 9. So memorandum and articles of association of the company, if it's a private limited company or LLP, or if it's a partnership firm, the partnership deed. Then the shareholding pattern will be given in the articles of association and in the partnership deed, right? The number of shares, and as I've shared, the only checklist is family owned company के लिए पर से एक restriction है, और private limited company के लिए other than it's a professionally run company, it should the key person share should be not be less than 51%. Third document, the financial standing of the company. The company should be a profit making company, that is most important. लॉस मेकिंग कंपनी और लेस देन 3 years, उनके पास ईमान इंश्योरेंस लिया नहीं जा सकता है, और the insurance advisor and the recruiter should not go to that company unless they have completed 3 years and they are having good profit, right? Next, audited balance sheet and profit and loss account of the company. कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, इनका 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट होना चाहिए, और इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए, because whatever income tax return you have filed, you must be having the computation as well as the acknowledgement. That is most important, both for the company, for the entity, as well as the key person. KYC of the beneficial owner of the entity, KYC of the beneficial owner of the entity and a key person. KYC क्या हो सकता है, उसका आधार का, नेक्स्ट बताएं. नेक्स्ट,
This is regarding the key persons document that is required. That is that he is an employee should be established. Form 16 for the last 2 years, and bank or alternatively bank statement of 6 months with salary credit. उसको salary credit होना चाहिए, and proof of remuneration from the entity. Proof of remuneration can be Form 16 or the bank payment and the terms appointment letter from the company, as well as the amount that is credited is a substantial proof. And income proof, income proof, eligibility under the keyman insurance. How is eligible under the keyman insurance? His last 3 years, Form 16, as well as ITR, income tax return, as well as the computation of the last 3 years. और पहले भी बताया था how is a key man or why how is a key man for the company that has to be established. He or she can be a key person, can be established. And remember, when you talk about key man एक नहीं हो सकता. It can be employee as well as the owner of the company. So एक ही सीटिंग में आपको अगर दो तीन की पर्सन नजर आया, depending upon that you can give the coverage to 2-3 persons, and that premium can be debited to the profit and loss account. Next. I hope everybody is understanding, right? How many are there? Devendra Panda, Manoj Tanekar, and Suryakant Gaikwad, sir, right? So now I'm going to the frequently asked questions. Now, while you are traveling through the keyman, you have understood the concept of keyman. The same thing is repeated here. So while you are going to the repetition, the purpose of repetition is जो ऑब्जेक्शन होता है एक एंटिटी को, एंटिटी के दिमाग में जो ऑब्जेक्शन होता है या उनके दिमाग में जो ऑब्जेक्शन होता है वो ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाता है, और इसमें ऑलवेज भी क्लोजिंग करने के लिए इजी हो जाती है, राइट? व्हाट इज द कीमैन इंश्योरेंस? कीमैन इंश्योरेंस इज टेकन बाय taken by a business entity on the life of the significant employee who substantially contributes to the success of the business, and to compensate the financial loss it may suffer due to the death or illness of the employee. वही है पहला, who is a keyman, that is covered. Who can be the proposer in the keyman insurance? Keyman insurance के लिए जिम्मेदारी किसका होता है? The company or the entity is responsible. The proposer company entity है, या तो partnership firm, या तो private limited company or LLP. Who pays the premium? The company pays the premium. Who pays the premium? Company pays the premium. Why? Because they have to safeguard the business. Why? Because they have to safeguard the business. And the death benefit, the compensation, हादसा होने पर, इवेंट ट्रिगर होने पर ये कॉम्पनसेशन किसके हाथ में जाएगी? कंपनी के हाथ में जाएगी, क्योंकि कंपनी ने प्रीमियम भरा है तो उसने टैक्स बेनिफिट लिया है, और कुछ बेनिफिट है तो कंपनी विल गो टू द कंपनसेशन टू द कंपनी, और कंपनसेशन जब जाती है दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द कंपनसेशन इज रिसीव्ड. तो यहाँ पे एक क्या बोलता है अल्टरनेटिव है. Instead of taking the compensation in 1 year, it can be spread over for 5 years, so that the compensation, the taxation burden can be reduced, or it can be spread. It can, because at any point of time, if the company is at 30%, तो 30% तो टैक्स होना है. अगर 5 करोड़ मिलती है कंपनी को, अगर वो 1-1 करोड़ भी लेते हैं तो हर साल में 30-30 लग जाएगी, instead of the amount going at one point of time. And then there are further further nuances is also. यानी और भी कोई मिस अगर एम्प्लॉय को अगर ये पैसा जाता है या पॉलिसी रिजल्ट उसका उसका फिर क्या होता है, द द ट्रीटमेंट इज डिफरेंट. नेक्स्ट, Keyman insurance. Now what was applied to company? Here he is talking about the who is the proposer in the partnership firm. In the partnership firm, the proposer is the partnership firm is the proposer. ये वो जिम्मेदारी रहता है की पर्सन का. Who pays the premium? The partnership firm pays the premium. The purpose, again, the whole purpose is to safeguard the business against unforeseen circumstances of the loss, or for the replacement of the person or discontinuity of the business, right? To safeguard all this jacket is taken, and the death benefit goes to the partnership firm. Now the products, I hope I am clear until this. What is the timing?
It's 39. The products allowed in key man insurance. Now जब मैं आपको ये ट्रैवल करता हूँ, when I'm taking you to the slide, if you are emotionally touched, then only the purpose will be served. मुझे मेरे बिजनेस को और मेरे फैमिली को कवर करना है तो मुझे की मैन इंश्योरेंस देना पड़ेगा। या फिर अगर बड़े पैमाने पे है तो सो यूर टच यूर अबाउट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर मुझे की पर्सन के अलावा मुझे और भी लोगों को कवर करना पड़ेगा। आई वांट टू कवर 40 to 50 people at one point of time. We can have an employer employee insurance also. The concept is the same. Instead of covering a few persons, it will be covered to many employees. And the beauty of the employer employee insurance is वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हो। यहाँ पे सिर्फ की मैन दे सकते हो, इसका एम्प्लॉयर दे सकते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे यू कैन टेक, यू कैन गिव इट टू, you can give any product of the company under the employer employee insurance. So that is more beneficial and more broad than key man insurance. ये एक लाइन पे बता रहा हूँ। And it can cover all the entities, private limited company, partnership firm, LLP, proprietors, HUF, trust, cooperative societies, right? So the bandwidth is more in case of employer employee। मैं छोटे लेवल पे टच किया, it's a separate subject anyway because उसका जो स्ट्रक्चर है इट इज फॉर बिजनेस पर्सन ओनली, इसके लिए मैंने टच किया, राइट। एंड द प्रोडक्ट अलाउड इन कीमैन इंश्योरेंस में मैं फिर से इंश्योरेंस में आता हूँ। इन केस ऑफ कीमैन इंश्योरेंस द ओनली प्रोडक्ट दैट इज अलाउड इज टर्म प्लान, एंड इन केस ऑफ बजाज लाइफ इंश्योरेंस इट इज ई टच लाइफ शील्ड, ई टच लाइफ शील्ड प्लस, and all these details of the product will be explained by the business development manager and branch manager because they will take on from where our concept discussion is over। आरओपी वेरिएंट इज नॉट अलाउड। आरओपी का मतलब है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी आप फायदा बिजनेस ओनली टर्म प्लान इज अलाउड, नो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, राइट। सो effective the presentation started with who is the key man, then it was it focused on the benefits under section 37(1), and then it discussed on the concept of the checklist of the document that is required, and then the frequently answered question again repeatedly emphasized on who is the key man and what is the structure around, and who is to pay the premium and who is responsible, who is to get the who is the proposer, that's what we discussed under the FAQ, and maximum term under key man insurance. The maturity age is 65 years, in closely knit family it is 75 years. In a professional run firm it's 65 years, and in family business it is 75 years. You can give the Cayman insurance cover, right? And are the premiums paid by the community and perquisite in the hands of employees? ये एक ये सिचुएशन कब होता है? प्रीमियम पेड बाय द कंपनी एंटिटी अंटिल द स्टेज ऑफ असाइनमेंट। अगर ओनरशिप कंपनी के हाथ में है पॉलिसी का, till that time it is will premium, till that time the compensation will go to the company, and once it is assigned means the ownership is assigned to to the employee, whether employee is in whether the employee is in whether the employee quits the company or whether he resigns the company. In that case the premium will be paid by the company, paid by the key person, and the benefit will be going to it will be treated as perquisite in the hands of employee, and it will be taxable at that point of if he is alive. And if he is not alive, then the benefit that goes to the family, the entire amount will be exempted under section 10, section 10D. On the event of quitting or resignation it is a perquisite, and on the event of death the compensation going to the family will be not taxable under section 1010D. So इसका स्वरूप बदलता है जैसा इवेंट का स्वरूप है। अगर रिटायर हो गया या the policy is resigned in his favor and it is still alive, उसका स्वरूप है it will treated as perquisite। What would happen if a keyman leaves the employment? वो तो मैंने बताया। The ownership or the policy is to be closed, number one, or it will be assigned absolutely to keyman। अगर कीमैन चला गया तो कंपनी को लगेगी मुझे कीमैन का प्रीमियम नहीं भरा है, तो कंपनी क्लोज भी कर सकती है। और इफ इट इज असाइन्ड टू द कीमैन पर्सन because of his loyalty, then in that case the the risk and the risk and the reward will go to the employee, key person। Now comes the logical part।
It's a selling story, and one has to understand this very important, right? Now, while I'm discussing this, I'll give you the practical example. Age 30, 2 crore cover, and the premium is 42,717, payment for 10 years. Now, if it is for 1 year, it is 42,000. For 10 years, it should be 4,27,170, right? So let us take the premium. 1 year के लिए ले रहा हूँ। Right. Now आप ध्यान से देखिए 0.21, अगर मेरा कवर 100 है तो मेरा प्रीमियम है 21 पैसा, बराबर है ना? Right. अगर इसको 10 साल में ले तो इंटू 10 करो, 20, 10 साल के लिए 20, इट इज 2 रुपीज, एंड फॉर 30 ईयर्स, क्योंकि कोई भी बिजनेस 20 एक आदमी 30 साल के लिए चला सकता है सिर्फ 6 रुपया पे। या तो 2 रुपया होगा 10 साल के लिए, या 4 रुपया होगा 20 साल के लिए, या 6 रुपया। इसमें क्या होता है, मेरे हाथ से कितना जा रहा है, मेरा बिजनेस प्रोटेक्शन कितना, तो मेरा ध्यान किधर होगा, अगर मुझे कवरेज मिल गया, इफ आई हैव टेकन द प्रोटेक्शन, आई कैन रन द बिजनेस फ्रीली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, एक्सपांशन के बारे में सोच सकता हूँ, वॉल्यूम के बारे में सोच सकता हूँ, या कोलैबोरेशन के बारे में। मेरा ध्यान सिर्फ बिजनेस बढ़ाने पे नहीं, राइट? इज इट गुड और बैड? और 2 करोड़ 30 ईयर्स के लिए एक आदमी के लिए, अगर 6 आदमी, अगर 3 आदमी होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3, इट विल बी 6 करोड़, एंड अकॉर्डिंगली इट विल बी 18 पैसा, राइट? सो ये सब डिटेल जो है 1 to 1 में बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल है 2 कोटी का, अपना कलेजा बढ़ाते हैं, तो वहां पे लिखा है अर्ली एग्जिट, उसका भी खास बात है, मैं बाद में बताऊंगा। भी 5 करोड़ का पड़े ये कवर लेते हैं। नाउ दिस इज द लॉजिक पार्ट, जो बिजनेस हर बिजनेस मैन कहते हैं मेरा क्या टूटा और मुझे क्या मिला। नाउ 1 more 0, कितना जीरो बराबर है क्या? तो 7 बराबर है। हाँ, ईयर इट इज, सी दिस, इट इज 0.03, 003, यानी इट इज लेस देन 1 पैसे, बराबर है? It is less than 1 पैसे for 1 year, right? And for 10 years it will be 30 पैसे, and for 30 years 91 पैसे पे आपका 30 साल का काम चल रहा है। सोचो सोचो सोचो, ये भी धंधा ही है। यहाँ पैसा बचा तो आप अपना प्रॉफिट भी बचाया, और प्रॉफिट बचाया तो वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो। 91 पैसा फॉर 30 years, रिमेंबर, करेक्ट है ना? एंड अनदर एग्जांपल, दिस इज फॉर द पर्सन हु इज 40, एंड फॉर 40 में तो आदमी मैच्योर हो जाता है, अपना धंधे का तो दर्द समझ लेता है, ही अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द बिजनेस। लाइव एग्जांपल, दिस इज गोइंग लाइव एंड वायरल, प्लीज। एंड द परसेंटेज 10 crores for 40, the person is 40 years, क्या 30 पैसा आ जाता है for 40 years, for per person is 40 years, for 1 year it is 30 paisa, right? For 10 years it is, and then it will be only for 20, we will for only up to another 3, and for 20 years it will be 6 rupees, right? 6 रुपये में 100 का कवर ले रहा हूँ। अच्छा, ये 10 कोटी सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, इसका भी अगर 20 कोटी का लेगा तो 2 आदमी के लिए कवर कर सकते हो, सिर्फ तभी भी 6 रुपये होगा। और see the company will be doing volume of business, so 10 crore and 5 crore will be a minimal amount. And the last में जो लिखा है early exit, this is very important. There is a clause there, if a person wants to exit when he has taken a policy for 10 years or 20 years. So for a professional, for a professionally run firm, it is 65 years is the age of, up to the age you can take, and for 60 years, right? And for a professional run company, it is 70 years, right? So before the 65th year, if he surrenders the policy in 61 or 62, right?
especially in case of term plan, or if we quits at the age of 71, the coverage will go, and the entire premium which you have paid, you can get back. That is the meaning of early exit, right? And during the active business phase, you are taking a coverage, and when you are when you want to quit the business, or when you want to close the business, or when you want to transfer it as a legacy to third person, the entire premium paid you can get back. Is it good or bad? Right? So business has to be done with smartness and intelligence, right? So the reward and risk is what we talked about in case of key-man insurance and employer-employee insurance. I hope whatever I have addressed is uh, is from the PPT which I have covered. I have this PPT in my hand, and the only request is I'll share it in the YouTube, and whether you press the bell icon or no, it doesn't matter to me. You share it with many persons. तो those were businessmen. आप आपके business circle में rotate कीजिए, so that they can also be benefited by this PPT, and then you can take an appointment with me. My appointment, right? Before the appointment, I will talk about the solvency margin. This is about Bajaj life insurance. The solvency ratio is 432%. Solvency ratio means its ability to discharge the liabilities in case there is a liability. अगर liability 100 का है, तो कंपनी सक्षम है, उसके पास 425% है इस लाइबिलिटी को चुकाने में। 400, बाकी बाकी सब कंपनी के देखिए, और 200 के नीचे है, और इनका 400 गुना है, right? So they are strong enough to pay your settlement of claims. Do not worry about the claims. And we have a strong team of Bajaj Life, that is from Kalyan branch. We have a strong branch development, business development manager, and branch manager, and regional managers. They are ready to support. So the message is get set and go. Get set and go. और मुस्कान के साथ मैं बोल रहा हूँ. My contact number is 9920168778. 9920168778. And we have our office in Kalyan at our near the station. The address will be given to you. And we have also the branch of the company in Kalyan, right? So before I conclude, I would like to give a few messages. ये इसको ब्रॉड कर दो. मेरा मेंटर मुझे सिखाते हैं, the way you do anything is the way you do everything. जो काम जैसा करते हो वही काम आप सभी काम करते होंगे, राइट? जो आज तक करते आए हो वही करोगे तो वही मिलेगा जो आज तक करते आए हो. कुछ हटके करना है, हटके में सोचना पड़ेगा. और हटके क्या करना है इसमें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप भरते हो इतना और मिलता है इतना, भरते हो इतना मिलता है इतना. तो उसमें अगर सोच आपका चल गया है, तो अंजाम देने के लिए हम बैठे हैं, राइट? टू गिव द result we are there, right? And only 13 documents are required. मुझे समझना है कि मुझे क्यों करना है. 13 डॉक्यूमेंट्स लेना है और प्रीमियम भरना है, प्रॉफिट बचाना है, राइट? सो आवर निश एरिया यानी हमारा मेन पोर्टफोलियो है बिजनेस प्रोटेक्शन एंड रिस्क. तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि मुझे जितना भी बताना था मैंने बता दिया है. एंड thanks to all the persons who have attended the webinar patiently. If you have any questions to ask, please ask. I'll wait for 2-3 minutes or 5 minutes, right? And before I have to give a thanks to Afaq, I want this will be shared in the YouTube today, right now, and it will be you can, if you are a business, if you are an advisor or a recruiter, you can share it with many persons so that they can reach us, and we can do all this because tax planning season in compliance season is over, and now it is a tax planning season for saving the tax of the current year 25-26, assessment year 26-27. So anybody can come and discuss with us in the month of November. Another 15-16 days are there, we can discuss it. And apart from this product, we are also selling
market related plans like ULIP as well as traditional plans. Those who are having corpus and those who are at the later stage of the life who do not want to take risk, we have traditional plans which gives them a rate of return which is more better than FDRs. So चाहे आपको गारंटीड फंड चाहिए या मार्केट रिलेटेड फंड चाहिए या फिर टर्म प्लान चाहिए या फिर combination of this under one roof we can give many things. The only purpose of this is to save your tax. तो टैक्स एक बार गया तो गवर्नमेंट की बस नहीं आएगी. अगर प्लानिंग किया तो आप टैक्स भी बचा सकते हैं और आपका जोखिम जो है फैमिली के लिए है वो भी कर सकते हैं. इसके साथ धन्यवाद बोलता हूँ. एंड बिफोर आई एंड आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स गिविंग टू Afar Khan, who has painstakingly come because we are conducting the webinar from every Sunday at 5 p.m. From October. This is our sixth seminar, right? And still we will have another six seminar until 31st December. The purpose of holding the seminar is not to hold ज्ञान नहीं बांटना है, आपको जागृति करना है, ज्ञान बांटना है और आपसे आपके लिए ये प्रोटेक्शन करवाना है, आपसे ये प्रोटेक्शन करवाना है. तो मकसद ये है, राइट? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तसंच यस पुढे. भिजत ठेवते तसंच. हाँ कौन बोले? हाँ बोलिए साहब मैडम. सूर्यकांत गायकवाड़. Anybody, any questions, please? You can unmute yourself. अपन unmute करना पड़ेगा. We will unmute you for 2 minutes. And if you do not want to say, you can say hi also. Sir, very well conducted seminar. I think so. It's really good of you with the intensity what you are taking it, and that too on a Sunday when people try to rest. It's really amazing on your part. And it's a really hats off to you, sir. Okay. Really good. I like the PPT, what the way it has been done, and it has been thoroughly explained in a very good manner. Thank you very much, sir. Thanks for the good word, sir. Your good word is a wisdom to us. And since we met in Baroda last 2 days, I'm happy you took the initiative of onboarding on the webinar, right? Right, sir. Right, sir. Right. So nice That of too, you. because of AFAC, I could listen to you. That's really good. Really good, And means. And I'm Afaq really, is my article clerk. yeah, yeah, I know. He was I working know. under me, and now he has joined an organization in which Consoli. He has joined as an accountant. Wow, very good. Congratulations to AFAC. Really good. Means I saw the potential in AFAC. We had a long conversation in the afternoon Oh, also. so nice of you. So He, nice of you. he, Nice of you, sir. he, And he, I wanted to crack the prison button also. We will yeah, check with yeah, you. That's all. yeah. I have already spoken to AFAC. After this webinar, we can have a short call, right? Okay. Right. Okay. 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 Thank you very Anybody much. else, sir? Thanks for the compliment, sir. Welcome, sir. Suryakant Gaikwad, Devendra Panda. Good evening, sir. Good evening. Fantastic meeting, sir. It's like a wonderful thing. Like explain, it's very well. अच्छा कंसेप्ट है जो कंसेप्ट से हम अपना बिजनेस साथ साथ में हमें एम्प्लॉयर का भी नॉलेज मिल जाता है. देन बिजनेस के साथ में हम अपने खुद को भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर. ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. सो वेल डन सर. अगर इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं तो जितने हमारे मोर पार्टिसिपेंट होंगे उतना हमारा नॉलेज हम लोग स्प्रेड कर पाएंगे. वेरी नाइस. Thank you, sir. And Devendra Panda is my business development manager from Bajaj. So my team is also there. So that is also strength to us. Thank you, sir. Yeah, it's my pleasure, sir. Okay. And with this, we treat this webinar as concluded for the day, for today. Thank you. number आला ना. Thank you.